field, they can ask you to derive the expression. So derive कर लेना dw, ठीक निकाल लेना t into d theta, and take integration of work done. It is same as u minus mb cos theta. M is a vector and b is a vector. Then we did some special cases, yes sir and let's discuss. जो हमने एंगल डाल के देखे थे, थीटा इज इक्वल टू वगैरह वगैरह, जस्ट वन वैल्यू एड इन दैट. So the last thing we studied was that there is a bar magnet, and this bar magnet is residing in I will send you the test papers now. Okay? ठीक है. I was कौन सा struck चैप्टर का somewhere. भेजेंगे सर? मैं फर्स्ट से भेजना शुरू कर दूंगा, मैथ्स और इसके. अच्छा ठीक है. ठीक है. I have to do coordinate geometry with you, which is Yes, sir. bit lengthy, but I will cut it short and be very to the point. 11th standard. Then I have to do rotational motion also. Yes, sir. Okay. वो भी दोनों बड़े काम के हैं, उसके बिना आप 11th standard नहीं कर सकते. You have to know both 11th. So this is your bar magnet, and of length 2L as usual. The strength of the poles is QM and QM. This is north pole, this is south pole. South pole. And the force being experienced is Q, the pole strength multiplied by the external magnetic field, which is this. It's uniform and is also on the other side, minus Q into B. And the torque is given by force multiplied by the perpendicular distance between the line of force. ये दिख रही है, ये line of force we had drawn. I'm just giving you a quick reminder. ये दोनों forces हैं, इन दोनों Yes, के sir. बीच में जो perpendicular distance था वो ये था, ठीक है. हाँ. force arm. So I'm just giving a quick introduction again. ये पढ़ चुके हैं हम. हाँ ये Force into force समझ आ गया. arm. Okay. Yes. So it's a torque, force into force arm, and is torque is also, by the way, in 11th standard written as force arm multiplied by F. So a torque actually is a vector product. Okay. So if you have a three-dimensional system like this, and you know that the force is in certain direction and R is in a certain direction, the angle between them is theta. So this is your R and this is your F. Then R cross F is when you move your hand from R to F, like a circle like this. Like this. ठीक है? ठीक है. And this is, किसी का हाथ आ रहा है बीच में? वो मेरा अच्छा, ही है. oh, okay, no worries. So R cross F, and this is your torque. So torque actually is a vector, and it comes from the vector product of perpendicular distance, and ये हम लिख रहे हैं magnitude actually. Okay. वैसे तो मैंने एरो लगा दिया, but the real formula is this. और अगर आप इसकी वैल्यू निकालनी है तो force into ये जो R है, or sine of angle between them. This we've already discussed. Yes, sir. So हाँ, torque ये was समझ आ actually equal to force is Q pole strength multiplied by B into R into sine theta is equal to M B sine theta. And therefore torque is product of M cross B. R क्रॉस F की जगह मैग्नेटिज्म में 11th में पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन में टॉर्क. R क्रॉस F वही डेरिवेशन जो है जब मैग्नेटिज्म में लगती है, बार मैग्नेट की रोटेशन की बारी आती है, तो ये वाला ये आता है आंसर. ये फोर्स ही है, ये फोर्स का फोर्स आती है टॉर्क के फॉर्मूले में. तो Yes, sir. फोर्स इन द केस ऑफ बार मैग्नेट इज QB. ठीक है? ठीक है. समझ गया. Alright, so कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए आपको घुमाने के लिए, तो द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. Pole. So R cross F. Okay, so this is one thing we studied.
The second thing we studied was then we studied the angles theta equal to 0, 180, 90, T max, T min. Okay? Yes, sir. The डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि कर चुके हैं. Second thing we studied was the potential energy stored by the magnetic dipole in an external magnetic field, which we got as U is equal to minus m dot b. Yes, So sir. potential energy जो होती है potential energy, it's a scalar. It has no direction. Correct. So the confusion, there should be no confusion. Torque is a vector product of M and B. But potential energy is a scalar product of the same vectors. अच्छा. If I give you M and B and I tell you to calculate torque, take a vector product. Draw a determinant like structure I, J, K. For example, I tell you M is given to be 2I minus 3J plus 4K. Write 2 minus 3, 4. Then I tell you the magnetic field in Tesla is given to be I plus 2J plus 5K. 1, 2, and 5. Solve the determinant. That answer will give you the torque. Because it's a vector product. ये determinant की form vector product की form है. हाँ. I hope you know this. कभी पढ़ा होगा Yes, sir. vector हाँ, product. ये पढ़ा हूँ. हाँ. ये vectors में भी पढ़ा होगा. Vector product C. A cross B is equal to C. But if you do a dot product of the same two vectors, which means now you write the 2I minus 3J plus 4K dot I plus 2J plus 5K. If you do this, you will get 2 minus 6 plus 20 joules with a negative sign. So you'll get minus 2, sorry, 20 minus 6, 14 minus 16. This is energy. So using the same two vectors, you can calculate a torque and a potential energy stored inside the dipole. Dipole. यहाँ तक कर लिया था हमने? Yes, sir. All right. And then we studied theta is equal to, because the dot product is minus b and cos of angle between them. So if you put theta is equal to 0, I will write it separately here so that it is clear in your mind. Theta is equal to 0. U will come out to be minus m b cos 0 is equal to m into b magnitude. Cos 0 is 1, just for you know this, right? Yes, sir. ये तो. Now the potential energy is very negative, highly negative. Yes, cos 0 pe, right? So this potential energy is at theta is equal to 0, which is k se high, and everybody wants to be at the lowest possible energy, which is this only, जो ये लिखी हुई है. So this is the lowest possible energy when the angle between M, which is always from south to north, and the magnetic field becomes 0, which means they become parallel to each other. The M is in this direction, for example, and the B is also in this direction. So this is south to north, and the B, so the angle between the B vector and their parallel lines, and therefore the angle between them is 0 degree. So whenever you keep a magnetic dipole inside a magnetic field, and that dipole, so north pole से emerge होता है हमेशा magnetic field, और साउथ पोल की तरफ जा रहा है, तो हमें मालूम है लेफ्ट पे नॉर्थ है, हमें मालूम है 0 डिग्री जो मैग्नेटिक डाइपोल magnetic movement होता है, that is from south to north. If it rotates like this and rotates like this, तो बढ़िया है ना, north pole will get attracted to south and the south pole will get attracted to the bigger north pole. यहाँ एक external magnetic field का source लगा के रखा हुआ है, जिसके magnetic field में your dipole is rotating and dancing. So it comes and it gets aligned and it looks like this.
North pole gets attracted to south, the south pole gets attracted to north. 0 degree. This is the lowest possible energy, and therefore, if you disturb the dipole, for example, your dipole is lying horizontally very comfortably now because this is the lowest energy. If you push it up a bit, like disturb it a bit, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे अच्छा, ऐसे जरा थोड़ा सा ऐसे, राइट? तो जैसे स्प्रिंग नहीं होता, वापस आ जाता है स्प्रिंग, यस सर। ये वापस आ जाएगा, थोड़ा सा हिलेगा, ऐसे ऐसे ओह, ऐसे अच्छा ऐसे अच्छा हिल अच्छा। जाए, बिकॉज इसकी स्टेबल पोजीशन है ये। यू माइट हैव सीन एक खिलौना होता है जिसको धक्का मारो तो वो ऐसे ऐसे हिल के वापस सीधा हो जाता है। हाँ, होता है होता है। वो सेंटर अच्छा। ऑफ ग्रेविटी से सॉल्व होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेबिलिटी उसको बहुत लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी उसकी वहीं पे होती है, तो आप जब भी उसको धक्का मारते हो तो कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऐसा हो जाता है कि द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग बट कम्स बैक टू द स्टेबल। सिमिलरली दिस विल ऑसिलेट एंड देन कम बैक एंड स्टॉप। So this position, because it is like this, if you have this bowl and you keep a ball here and this ball rolls and you push it, it rolls and it goes up. Finally, where does the ball want to go? Here. Then the ball will go like this and it wants to go where? Here. It always wants to come to the central position, which means this is the place of stable equilibrium. इक्विलिब्रियम है और स्टेबल भी है। लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी जब होती है वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई स्टेबिलिटी है यहाँ पे यार, यहां से इसको धक्का दो फिर वापस आ जाता है। इट फील्स वेरी स्टेबल हेयर। सिमिलरली दिस डाइपोल, if you have kept it horizontally like this, when it is stable, north is towards the bigger south, which is the external magnetic field. Okay, now this is your north and south. If I slightly push it from here, इधर धक्का दूंगा अगर मैं, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ये। अब मैं उंगली हटा लेता हूं अपनी, तो ये क्या करेगा? इधर जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे हॉरिजॉन्टली, फिर थोड़ा सा ऑसिलेट करते हुए यहां पे आएगा, फिर वापस अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये ऑसिलेट करता रहेगा उस पॉइंट पे। एक रॉड जो है ऑसिलेट कर रही है ऐसे ऐसे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पे वापस आना पसंद है, जैसे इस बॉल को ऊपर जाके वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आना सही लगता है। So this is called as a stable equilibrium. Now let me show you another example. So you will say, okay, so what if I do this? Okay, if I keep my stuff like this and I keep the ball here. If I drop it here, would it like to come back or will it like to? Yeah, stable है ये. It is happy. रख दिया, सब balanced है, first class पड़ा है. If you जरा सा इसको धक्का मारा अगर, what will happen? Straight away it will come down. Will it like to go back? No. So while it looks to be in equilibrium here, this equilibrium is unstable equilibrium. Let's talk about dipole. So the dipole is now in this position. Unlike what it should be. This is a north pole, this is a north pole. Ulta kar raha hu main ab. Dipole, and this is my south pole. So there is an external magnetic field which exists. Okay, so let's draw that external magnetic field. Minus MB cos of 180. M is in this direction. B is still in this direction. M is from south to north and B is from north to south. So they are anti-parallel and therefore theta is equal to 180 degree. So if I put the value now, minus M B, इसका मतलब होता है modulus, you already know that. Yes, sir. Cos of 180 is equal to minus M B minus 1 is equal to M into B cos 180 से minus 1 plus MB.
So the same energy which was minus mb, which was the lowest, has become highest. Yes, sir. Which magnet would like north pole would like to stay with north pole? अभी Agreed. टॉक नहीं लग रहा by the way, Hmm. because the sin theta is also sin 180, so टॉक भी वेक्टर प्रोडक्ट में जीरो आएगा, तो पड़ा तो रहेगा वहां पे क्योंकि इक्विलिब्रियम है, बट अगर आपने जरा सा भी से टच करा ना यहाँ से नीचे, Yes, sir. ये घूम के अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहां से घूमता हुआ यूं आ जाएगा, Yes, sir. ऐसे घूमता हुआ Hmm. तैयार बैठा, तुम छुओ तो सही मुझे, Yes, sir. वेरी सेंटी स्टेट, Hmm. सही है, ठीक है. मतलब टच Yes, sir. करो तो गया, Hmm. unstable equilibrium, very similar to class 11th unstable equilibrium. Any doubts in your mind that come कि क्या हो रहा है? Highest potential energy, remember this body is at very high potential, इसके पास height भी है, इस बॉडी yes. की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये तो ग्राउंड पे है, Ground पे है. आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हो जब इसे ऊपर लेके जा रहे हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले ही हाई कर रखी है आपने, तो आप इसको जब छेड़ते हो तो नीचे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है, Hmm. and doesn't want to, so bodies don't want to stay at high potential energy, Yes, sir. they don't want to, they are in unstable, पड़ी होती है, मेरी बोतल भी ऊपर पड़ी है सामने, but does it want to be there? The moment I leave it will come down falling. Yes, sir. अभी इक्विलिब्रियम में मेरी बोतल जो पड़ी हुई है ऊपर, Hmm. Agreed. so hopefully so you may be asked, 4 choices are given to you, which of the following represents the condition of unstable equilibrium for a dipole in an external magnetic field? Hmm. ठीक है जी, you have to see the diagram very carefully कि B और M उल्टे कहां पे है, B और M उल्टे उल्टे. कहां पे है, M is from south to north, got it? Yes, sir. समझ. All right, अब समझ में आया, so this completes your knowledge of the concept of potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field. ठीक है. ठीक है, अब क्योंकि मैंने एक चीज नहीं बताई थी, इक्विलिब्रियम, Hmm. let's go to the next topic, which I said we will continue with the theory, so that, okay, now I think we will go to, now if you remember in the previous chapter we studied a current loop, okay, हाँ, so पढ़ा now था. we are studying current loop, ये current loop है, और हमने देखा था इसके दो साइड साउथ और नॉर्थ बन जाते हैं डिपेंडिंग ऑफ कहां से आप देख रहे हो, ओके, Yes, sir. सो इवन अ करंट लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल. अच्छा. Magnetic dipole, conventionally we have seen a bar magnet only. Hmm. We've said this is north and this is south, and close भी होता है अंदर, by the way. Yes, sir. They're closed loops. They don't terminate like electric field. So ये आपकी एक loop है, circular loop, and so this also behaves like a bar magnet. Okay, it's a current carrying loop, by the way. Yes, sir. Current can be in either direction. So you can decide the current all by yourself and say, okay, this is my, okay, sorry, same ही बन गई. Let's draw in the reverse direction. So this also behaves like a, so these are two current loops carrying currents in. So individually, मतलब ये भी एक magnetic dipole है, मैंने सिर्फ current change करी है. It is like saying कि मैंने इधर north south है तो इसको मैंने south north रख दिया. कोई फर्क नहीं है, right? Yes, sir. दोनों individually both constitute a current loop, both are magnetic dipoles. If you remember, if you do the derivation of magnetic field due to a current loop, the B which comes because of this magnetic loop is mu naught I a square upon 2r cube. Yes, sir. ठीक है, and this is at the long distance, दूर axis के ऊपर. ये axis होता था और एक 3/2 की पावर आती थी अप्रोक्सीमेटली, ये रेडियस था और एक डिस्टेंस a था. A was considered very large as compared to the radius. तो मैग्नेटिक फील्ड जो थे वो
y वाले कैंसिल हो जाते थे, Y वाले एक ही cancel था, हो गए। दोनों ऐड हो जाते थे, ये थीटा थीटा थे। तो Yes, B sir. due to a current carrying loop at the axis at a distance a from the center is given by the formula. So what you do, you rewrite this formula. Very famous question ये पूछा जाता है. अच्छा, Okay, B is equal to mu naught. Let me divide and multiply by 2. So this is 4 pi. This is r cube. And this is 2ia. Pi r square. This is a. This is a. And this is r, sorry. Okay. This is the okay. distance from the axis. This is the radius of the current carrying loop. और पाई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई से, तो वो जो पाई ए स्क्वायर है उसको बना दिया एरिया, और जो 2 है वो यहाँ रख लिया, और नीचे भी एक 2 पाई कर दिया, मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। ठीक है। तो पाई और ए स्क्वायर बन गए एरिया, ये एक्स्ट्रा 2 जो बचा वो ये लिखा हुआ है, और नीचे आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 2ia. दिस इज व्हाट इज लेफ्ट. Okay. Okay, where I obviously is the current in the loop. Loop. ठीक है? ठीक है। All right. Now let's talk about the, if you remember, electric field जब हमने पढ़ा था, due to a dipole plus minus q charge की वजह से, उसका जो फॉर्मूला था वो था 1/4 pi epsilon naught p the dipole moment q into 2a divided by r cube. R cube. This was the electric dipole. ठीक है? Now compare the two equations, one on the left, one on the right. Compare the two equations. See, सिमिलैरिटी दिख रही है दोनों में, B और उसमें. फर्क ये है, इसके अंदर म्यू नॉट है, इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट है. 4 पाई है, r क्यूब है, r क्यूब है. नाउ सी दिस क्वांटिटी 2ia and this quantity, the quantity which we have created by dividing and multiply by 2 pi, तो हमारे पास एक 2ia थोड़ा सा अलग आ गया. Yes, sir. ओके, बाकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूब के अंदर कुछ खास चेंज नहीं है. दिस क्वांटिटी which is the 2ia quantity, okay, or ia quantity is called as the magnetic dipole. Okay, so ये जो सर्कुलर करंट है, okay, इसका जो ये वाला क्वांटिटी है I into A which you see, Yes, sir. this I into A is actually the magnetic moment of circular or current carrying loop. जो M पढ़ा ना, M ऊपर हमने M पढ़ा था, एक साउथ टू नॉर्थ होता है, पिछली बार पढ़ा था ना M, M डॉट बी, M क्रॉस बी, वो बार मैग्नेट के लिए पढ़ा था. अच्छा. M जो पढ़ा हमने मैग्नेटिक हाँ, वो डाइपोल ऊपर मार मोमेंट, वाला था. हाँ, ठीक है, वो बार मैग्नेट था ना. हाँ. Yes, sir. M डॉट बी, M अभी पीछे पढ़ा हमने M. ये वाला जो M है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए. अच्छा. ओके, जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, कैरिंग अ करंट I, और उसका जो एरिया इनक्लोज्ड है वो A है, सो द मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय I into A. Yes, sir. So अगर if I tell you this is my circular current carrying loop, it has a current I, and the area which it encloses is this pi r square. Please tell me what is the magnetic moment of this current loop. It can be any shape, can be rectangular also, okay, but it is in one plane. And so इसका जी बताओ जी, ये इसके अंदर करंट जा रहा है, बताओ जी, does it behave like a dipole, magnetic bar magnet? हाँ, it does. How? It also has a M which is called as the magnetic moment, dipole moment of a current carrying conductor. So this is called as a magnetic
dipole moment of a current carrying current carrying conductor. conductor. Okay. Now you'll say, sir, what is this vector all about? The Direction. area vector is a perpendicular on the area. So अच्छा. this is your plane of the area. इसके ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है आपको. अच्छा. मतलब होल्ड योर राइट हैंड एंड कर्ली फिंगर्स एंड इस करंट को अपने जो हाथ है उससे लपेट लो. अगर क्लॉकवाइज करंट है, जैसे मैंने अभी करंट बनाया, दैट इज क्लॉकवाइज इफ यू सी. Yes, sir. Right, it is I think, yeah, it is clockwise. So the area vector, if you try to calculate the area vector, it will be downwards. पकड़ के देख लो ऐसे जैसे मैंने करा हुआ है हाथ यूं, एंटी क्लॉकवाइज में. if you make it clockwise, it will go up. I will draw clockwise now. I am drawing a clockwise now. So ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया है. I am drawing a clockwise. Okay. क्लॉकवाइज यही है. नहीं, पहले भी मैंने क्लॉकवाइज बनाया, सॉरी. नाउ आई विल ड्रॉ एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज क्लॉकवाइज ओनली. I will draw anti-clockwise now, which is this. Now hold your hand on it, on top of it like this. जैसे कि curly finger जो है इसके ऊपर आ रही है तो thumb अपने आप ऊपर जाएगा. अच्छा. So area vector n ऊपर है in the case of anti-clockwise. So this is counter-clockwise. Yes, sir. Counter-clockwise or anti-clockwise, one and the same thing. Anti या counter. So this is clockwise, right? Downward. ठीक है? Any doubts in your mind pertaining to the area? नहीं, अभी तो ठीक है. ठीक है? Okay. Yes, sir. तो जिस साइड भी n जाता है ना, जैसे इसमें n आ गया. Yes, sir. जिस साइड भी जाता है वो वाली साइड जो होती है नॉर्थ पोल होती है. अच्छा. और जो उसके नीचे वाली साइड होती है, ये वाली, दैट इज अ साउथ पोल. है तो एक ही रिंग. रिंग को ऊपर से देखो, जहां एरिया वेक्टर बाहर आता हुआ है वो, तो इस जगह पे दिस इज योर नॉर्थ पोल. नीचे वाली साइड नॉर्थ पोल मानी जाएगी, ऊपर वाली साउथ पोल, क्योंकि एरिया वेक्टर इज विल मूव फ्रॉम द एरिया टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. ये देखो, एरिया वेक्टर इज मूविंग फ्रॉम द लूप टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. तो ऊपर नॉर्थ पोल है इसमें. Yes, sir. जिस साइड भी एरिया वेक्टर बनता है, डिपेंडिंग ऑन द आपका जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, आपने हाथ से पहले करंट को लपेटा, एरिया की डायरेक्शन ढूंढ ली. एरिया की जो डायरेक्शन है वो वाली जो रिंग ऊपर की ऊपर साइड होती है वो नॉर्थ पोल ही बन जाती है. फिर तो पहले आपको उंगलियां लपेटनी है, उससे आपको डिसाइड करना है एरिया किधर जाएगा थंब की डायरेक्शन से. तो ये आपने डिसाइड कर लीजिए, ये थंब भी है मेरा. दिस इज योर थंब, राइट? Yes, sir. Now you know the thumb. Now the thumb is pointing upwards. जिस भी मुंह से, whatever face has thumb coming out of it represents North Pole. And the below surface, नीचे वाला, will be the, तो है तो सिंगल तार ही, रिमेंबर. तार दोनों साइड से एक ही है ना तार तो. Yes, sir. मतलब एक साइड जो है वो बन जाती है साउथ और दूसरी उसी की उल्टी साइड बन जाती है नॉर्थ. North. ठीक है. Any doubts in your mind? South. कि any मतलब I into A is known as your magnetic dipole moment of any current. मैंने सर्कुलर से शुरू करा था बिकॉज आई थिंक सर्कुलर का B हमें मालूम होता है बहुत आराम से. हाँ. तो उसी की है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन कि देखो B फॉर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड B ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल में फॉर्मूले में सिमिलैरिटी है. डेरिवेशन नहीं करी हमने इसकी. B की मतलब ये हमने इंडिपेंडेंटली, वी हैव नॉट डन डेरिवेशन ऑफ I इनटू A कैसे आता है. वी हैव जस्ट सेड कि I मल्टीप्लाई बाय A इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट डाइपोल, खत्म. Of a current carrying loop, sorry. I into A is also the magnetic moment of any current carrying loop having area A and I current in it. ठीक है, समझ. ठीक है.
So let's say if somebody says, okay, so if your coil has many turns in it, okay, so I have one turn and I इसके ऊपर मैं और भी turns लपेटता जाता हूँ. Hmm. So मैं लपेट रहा हूँ इनके ऊपर turns. So each turn will give me the same magnetic moment. So I'm going to add all the magnetic. So I have n turns. So the magnetic moment will become NIA. मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैंने वेक्टर नहीं लगाया. वेक्टर तो डिसाइड होगा कि करंट की डायरेक्शन कैसी है. ये बना लिया तो ऊपर वाली साइड नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल. Yes, अगर आपने अब बार मैग्नेट रख दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का ही इधर अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ, hmm. क्योंकि इसकी नीचे की साइड साउथ पोल है, अपनी की तरफ South खींच pole लेगा है. इसको. Yes, sir. ठीक है. Make sense? All right. Yes, sir. So that's your magnetic movement of a Hmm. current. So this is, मतलब they're trying to say कि बाकी दूसरे चैप्टर्स में से आपने और कहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट देखा है. बार मैग्नेट में देख लिया, Hmm. लेकिन we know that current carrying conductors also behave like magnets. This is an Magnet. example. हाँ. Obviously यहाँ पे वो Q और इस तरह का कुछ नहीं है. इसके अंदर जो है वो सीधा करंट और एरिया से मल्टीप्लाई हो रहा है. Hmm. Yes, sir. ठीक है. मैं आराम आराम से करा रहा हूँ. आई मीन हाँ. नो रश टू जस्ट रश थ्रू इट. मैं जल्दी नहीं है मुझे, कोई आराम से कर रहा हूँ मैं. Yes, sir. एक एक मतलब आपको थियोरेटिकली क्लैरिटी होनी चाहिए. उसके बाद वी विल डू प्रैक्टिस. नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो. ना ये तो ठीक है. अगर आपने इसको, इफ यू कीप इट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाय द वे, Hmm. like you kept a dipole, this was your, oh sorry, this was your bar magnet, and you kept it in an external magnetic field like this. Okay. So ये rotation करता, right? Hmm. If you pick up this magnet, obviously ये इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे बन गया. नॉर्थ पोल ऐसे है. अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रखता हूँ और आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको, मान लो ऐसे, अच्छा. ठीक है. ठीक सो है. इट इज लाइक सेइंग कि ये आपने एक नॉर्थ और साउथ में डाइपोल रख दिया ऐसा. ये मैंने क्या करा, करंट कैरिंग लूप की जगह नॉर्थ पोल तो मैंने ढूंढ लिया डायरेक्शन ऑफ करली फिंगर और थंब से. Hmm. मैं अब उसकी जगह एक बार मैग्नेट बना दिया मैंने, और मैंने बोला देखो जी ये डाइपोल ही है ये. अब Hmm. मैं अगर मुझे ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी वो दे देते हैं कि दे गिव मी current carrying loop inside an external magnetic field, if I draw in rough the equivalent magnetic pole, बार मैग्नेट, तो मैंने इसका इक्विवेलेंट बना दिया बार मैग्नेट से. मुझे Hmm. पता चल गया नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल यहाँ, तो मैंने बार मैग्नेट भी वैसे ही बना दिया. नाउ आई Yes, नो sir. फ्रॉम माय नॉलेज ऑफ बार मैग्नेट हाउ द बी एंड एम विल वर्क विद ईच अदर. So this is my M, this Hmm. is my B, this is the angle between them. This is my M, this is my B, their coterminus here. रिजल्टेंट की तरह नहीं देखना है इनको, ऐसे देखना है. अच्छा. दिस इज माई बी, दिस इज माई एम. एक ही पॉइंट से टच हो रहे हैं जब प्रोडक्ट की बारी आती है तो. Hmm. वन आफ्टर अनदर नहीं करना, ऐड नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक. एम क्रॉस भी ऐसे, टॉर्क Hmm. क्यों, Yes, sir. एम डॉट भी एनर्जी निकल आएगी. एनर्जी लेकिन निकल जाएगी. लेकिन लूप देख के यू नो कि इट्स वेरी डूएबल. आई नो माई एम from this rule. Maybe they give more turns on this. Hmm. They may give you more turns on this. Is there no problem? That means इसकी जो भी पोल है वो स्ट्रांग है. तो आपको m तो यहां से निकाल लोगे आप, नंबर हाँ. ऑफ टर्न्स आई और ए, और फिर Yes, sir. टॉर्क निकालने के लिए यू विल से ओके m क्रॉस b साइन थीटा. m निकाल लिया. Hmm. टर्न्स एम्पियर मीटर स्क्वायर. इसलिए जब हम पहले पढ़ रहे थे ना,
तो हाँ हमने ये यूनिट यूज करे थे, लेकिन आई डेंट टेल यू ये एम्पियर मीटर स्क्वायर आया कहाँ से। हाँ यस सर। सोर्स ये हमने सिर्फ लिख दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जी यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मीटर अच्छा जी, स्क्वायर। होता है, बस होता है। अब पता चल रहा है क्यों एम्पियर आया। पर बार मैग्नेट रहे हो और यूनिट लिख रहे हो एम्पियर मीटर स्क्वायर की, क्यों मीटर लिख रहे स्क्वायर। हो, इसीलिए। ठीक है। टर्न्स के कोई यूनिट नहीं होते, टर्न्स आर dimensionless, ओके। यस सर। So number of turns is this particular quantity is dimensionless. ओके। There are no units with the turns, ampere and area. ठीक है। Anything that comes to your mind? Any doubt? Anything that's not clear? नहीं अभी तो ठीक है। Straightforward है अभी तक, ठीक है। यस सर। ठीक है। Okay, let's move to now, which are जो मतलब अब बड़ी सही चीज है एटॉमिक लेवल पे। कैसे इसको हम इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब बोहर, you remember Bohr's theory where you have this Lyman-Balmer series which are taught in हाँ chemistry? यस सर। 12th में हम दोबारा पढ़ेंगे इसको, लेकिन इस चैप्टर में भी there is a use, because what happens is if you have a electron which is moving around a nucleus like this, so electron is moving, right? So electron आपका move कर रहा है. यस सर। So this is as good as, so third scenario of a, so first you studied magnetic moment for a bar magnet. Then you studied a magnetic dipole moment of a current carrying loop. And that was हाँ I into A. ये हाँ। A वेक्टर था और उसका यूनिट वेक्टर ये है, मान लो। लूप के ऊपर देखना था करंट और लगाना था वेक्टर, डिपेंडिंग ऑन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तीसरे के अंदर जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन व्हिच इज द इलेक्ट्रॉन। यस सर। So a revolving electron in anti-clockwise will be a current in the clockwise direction. Current is supposed to be in the reverse direction as electron. If the electron is moving like this, current is like this. So if this is my electron, then my current is this. यस सर। So this is like exactly like a current carrying wire, हाँ बिल्कुल। right? So equivalent current क्या हो जाएगा? I is equal to charge upon time. अपन टाइम हाँ। This will be equal to E by T. यस Is सर। equal to E divided by circular motion में we know the time period, it is the total distance upon the velocity of revolution is equal to EV upon 2 pi R. ठीक है। So this is your current. हम्म। पहले तो हमें करंट नहीं पता था ना, क्योंकि हमें I into A करने के लिए, तो let me find the orbit. So this is, since this is happening inside the orbit due to electron revolution around a nucleus from Bohr's model of nucleus or atom, we call this orbital magnetic moment. We don't call it exactly magnetic moment only, we call it orbital magnetic moment. Orbit के अंदर पाया जाने वाला m, और इसका साइन होता है म्यू. It is written as I into A. I is E into velocity upon 2 pi R multiply by pi R square. Mu is equal to EVR upon 2. समझ आ गया क्या करा हमने? हाँ यस सर। तो ये हो गया नॉर्मल. सो m नहीं लिखना है, इसको म्यू लिखना है. अच्छा। ये m था, ये भी m था, ये म्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट ही बट ऑर्बिटल. Okay, slightly different because it is inside the orbit, so we have made a small distinction. Now when you do rotational motion, for example we did momentum of class 11th, okay. Now momentum in class 11 was, this is your body with mass m and a velocity m,
the amount of motion it contains is P is given by the momentum. Now, in the case of when the rotational motion comes into picture, there is something called as angular momentum. Angular momentum. The amount of rotational motion inside a body. This is called as a linear momentum. But angular momentum is what? It is the rotational momentum. Rotational motion kitna hai andar? You may have a lot of linear momentum, but you may have zero rotational motion. But if you're moving like this electron, you have a angular momentum L, which is given by mvr. I will not get into details of angular momentum right now. It's also a vector. तो हम इसकी अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लेते हैं. mvr होती है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. बोहर ऑर्बिट, इसका भी फॉर्मूला होता है रेडियस का. वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 to 10 raised to power minus 31 kilograms. All right, let's now see what are we trying to do. So we know now that there is something called as mu, which we have just found out is EVR by 2. ये निकाल लिया हमने. The orbital magnetic moment. And now I am writing 11th standard say something called as rotational motion, right? Which is mvr. I said mass of electron, velocity of electron, orbital nth हो सकता है, nth orbit हो सकता है, velocity in nth orbit हो सकती है, होता है ना orbit 1 2 3 4 ऐसे, right? Now divide these two. So let's say mu in the orbit divided by the angular momentum will give you EVR by 2 upon mvr is equal to E by 2m of electron. This ratio is called as gyromagnetic ratio. Okay. ठीक है? This is called as gyromagnetic ratio, the ratio of the orbital magnetic moment to the angular momentum. If you calculate this value, E, the charge of the electron is fixed. 1.6 into 10 raised to power minus 19. 2 into 9.1 into 10 raised to power minus 31. If you solve this, you will get 8.8 into 10 raised to power 10 coulomb kilogram per kilogram. Yes, sir. This is what you will get. Okay. So if you want to write the value, so this actually is an equation that links class 11th and 12th. So they sometimes what they do in J is they will give you the orbital magnetic moment of the electron and they will ask you to calculate L. So ये तो fixed है. This ratio, gyromagnetic ratio is fixed. And they will give you the angular momentum of the electron. या बोलेंगे इस रेडियस में है तो आपको म्यू डिवाइडेड बाय एल का अगर फॉर्मूला याद है तो if they give you L of the electron, they give you the charge of the electron, so you can find mu, right? Mu is equal to E into L upon 2me. It's a vector again because m is a vector. This is also a vector, and angular momentum is a vector. This is charge on the electron, a scalar. Scalar, mass of the electron, a scalar, and this is L. Yes, sir. ठीक है. तो वेक्टर टू वेक्टर एक वेक्टर है इसलिए आंसर भी वेक्टर ही आता है. मैंने इसलिए नहीं ये वेक्टर होता है मैंने लिखा था पहले बट देन आई डिडंट वांट टू गेट इनटू डिटेल हाउ एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर. अभी छोड़ दो फॉर द टाइम बीइंग. ओके. And what we do is we also put a negative sign here. ठीक है. Derivation is, we don't have to do derivation of this. So what it tells you is the direction of vector L is opposite to the direction of vector mu. Both are in opposite direction. अगर एक 2i में है L तो mu will come out to be minus 2i. मतलब minus में आएगा, minus i में. So both are vectorially opposite. Direction wise opposite in nature. ठीक है? मतलब ये तो नहीं आएगा म्यू अगर एल दे रखा है ये. Yes, sir. तो you will have to calculate it, multiply by 2me divided by e. So you will get your
mu also. ये और ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन लगाना है, दे आर इन ऑपोजिट. नेगेटिव तो हाँ, You just need to remember a gyromagnetic ratio and finish it off. That's all. Now, बोहर ने एक कंडीशन दी थी केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स में 12th के अंदर भी पढ़ेंगे हम इसको, कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is quantized. Okay, it is always a multiple of h by 2 pi. तो L लिख रहा हूं मैं इसको, दिस इज एंगुलर मोमेंटम. मैं लिख देता हूं L इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. रोटेशनल मोशन की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है वो m इंटू वी नहीं होती, वो m इंटू वी इंटू आर होती है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस है हमारे केस में यस सर, ऑफ द ऑर्बिट. ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है विद वेलोसिटी v टेंजेंट. This is the r, mass of the electron. This is the velocity mvr is L. Mass is anyway scalar. I don't need to write a modulus. Now coming back to chemistry part, angular momentum का एक फॉर्मूला ये भी होता है apart from this. mvr is a straightforward formula. एक Yes, sir. बोहर ने दिया था, ये वाला फॉर्मूला बोहर ने नहीं दिया. ये जनरल मैकेनिक्स का फॉर्मूला है, जो हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ, वहां से. ये वाला जो फॉर्मूला है एल का, द एंगुलर मोमेंटम, ये बोहर ने दिया था. उसने बोला था एंगुलर मोमेंटम हमेशा एक मल्टीपल ऑफ ऑर्बिट होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है उसका ये प्रोडक्ट होगा, n इंटू एच. तो n की वैल्यू ऑर्बिट इज 1 to whatever, राइट? कुछ भी हो सकता है. इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ म्यू, इस फॉर्मूले में, so you can get mu substituting L here upon NH by 2 pi is equal to E upon 2 ME. So mu is equal to NEH divided by 4 pi ME. Okay. एक और फॉर्मूला आ गया बोहर से. So just be very careful that although this topic is very innocent type of topic, which is, चलो जी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चल गया क्या है, बट उसके बाद जब ये एल से लिंकिंग शुरू होती है ना, एमवीआर से एक बार लिंक करा और एक बार लिंक करा बोहर से. बोहर का जब पढ़ते हैं तो ये दोनों भी लिंक्ड ही होते हैं बोहर में. बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम था क्वांटाइजेशन वाला, कि द वैल्यू ऑफ एल ऑलवेज नीड्स टू बी मल्टीपल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n मल्टीप्लाई बाय h by 2 pi. ये बोहर ने बोला था, बोहर्स पोस्टुलेट्स. यस सर. तो ये जब डेरिवेशंस वगैरह होती हैं तो ये इक्वल टू mvr डाला जाता है. दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो एक बार हमने जब l को ये लेके इन दोनों को डिवाइड करा था तो ये रेशियो आई थी हमारी गायरोमैग्नेटिक रेशियो. The second time what we are doing, we are not using this, but we are using Bohr's postulate, जो second derivation है म्यू की. तो कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे वाले भी आ जाते हैं. उसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन टू यू, द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नोन टू यू, प्लैंक कांस्टेंट दिया होता है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू यूजिंग द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल. यू कैन सी म्यू is therefore directly proportional to the principal quantum number. Higher the principal quantum number, more is your orbital magnetic moment, directly proportional. हाँ. Yes sir. तो L को अब कुछ n में ले लिया, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, n 1 by n, n raised to power 3 by 2, ऐसे डाल दिया कुछ. You will say, यार ये तो this is a chemistry type of question. It is not. Actually, it is physics. Hard है थोड़ा सा. Yes sir. A lot of people will just study till here. I'll tell you from where. ये जो हमने पढ़ा म्यू, जो हमने डेरिवेशन करी ये वाली, कि भाई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन behaves like this, current, and then multiply I into a, get the answer, which is what we did. Yes sir. Step number 2. Step number 1 में calculate I, then calculate orbital magnetic moment, do this, and this is your
Answer and khatam. Hmm. No. Then starts the chapter 2 of this mu when you start linking with L. नई story चालू. Yes, sir. Once you link with L, the first thing you do is calculate the gyromagnetic ratio. Okay. I'm just showing it to you. Yes, sir. Second time when you do, you link it to Bohr's atom. Second time when you study, you link it to Bohr's atom. The first time you study, you link it to class 11th angular momentum. जब बच्चे क्लास 11 में एंगुलर मोमेंटम करते हैं तो उन्हें बोर का कुछ पता नहीं होता. अच्छा. ये मॉडर्न फिजिक्स में बहुत आगे आता है. केमिस्ट्री में भी 11th में आता है ये. सो यू हैव टू मेमोराइज दिस. म्यू का एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, Yes, sir. विच इज मोर प्रिंसिपल क्वांटम एंड बोर से आता है. जो आपका नॉर्मल वाले से आया वो ये हो गया. ये वाली जो रेशियो हमने निकाली, गायनो मैग्नेटिक रेशियो, एक ही आपको मेमोराइज करना है. इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ म्यू एंड एल. Yes, sir. This formula. This is mass of electron, me. ठीक है. ठीक है. Now I'll go to the next page. Why did we study all of this? क्योंकि there is a very important definition of Bohr magnetron. ये जो हमने अभी म्यू निकाला है n की टर्म्स में, EH by 4 by whatever, right? So that told you that the mu of an electron orbiting in nth orbit is given by the formula EH upon 4 pi me. So this is your orbital magnetic moment of an electron in nth orbit. Okay. Now let's talk about what is Bohr magnetron. So it is a magnetic moment which is associated with an electron. Bohr magnetron is a magnetic moment associated with an electron. Okay, due to its orbital motion around the nucleus, etc., etc. But when n is equal to 1, इसके यूनिट्स बना दिए इसने. तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि व्हाट इज अ Bohr magnetrons which are given to you. So they will tell you कि n is equal to 1. So put the value 1, electron charge, Planck's constant, divided by what? 4 into 3.14 multiplied by 9.11 into 10 raised to power minus 31 is equal to 9.27 into 10 raised to power minus 24 ampere meter square. ठीक है. So not only an electron has okay, so more detail for you, but I think it's pretty irrelevant. Bohr magnetron की definition तक it is fine. The detail is that you have an angular momentum of the electron which is L. We've already studied angular momentum. Okay, so mvrn या nh by 2 pi. This represents the angular momentum of electron. Momentum किसी भी बॉडी का हो सकता है, हम तो इलेक्ट्रॉन ही पढ़ रहे हैं. So let's only focus on angular momentum of electron. So if you talk about angular momentum of the electron, this will and if you calculate all of these which you have put here, n is equal to 1, सब डालो, the value of mu which is associated with this electron in the first orbit comes out to be 9.27 into 10 raised to power minus 20. तो एटॉमिक लेवल पे इतना बोलने की जरूरत नहीं होती है. अच्छा. इलेक्ट्रॉन के केस में आप इसी को बोल देते हैं दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बोहर मैग्नेट्रॉन. कौन बोलेगा 9.27? इसका नाम रख दिया सीधा. इलेक्ट्रॉन के केस में डील विद वेरी सिंपल क्वांटिटी. बोहर पीपल नो दैट इसका कन्वर्जन ये है. यस सर.
ठीक है. Now, ठीक है. electron has one angular momentum, and this angular momentum has a orbital magnetic moment associated with it. Now what happens is, so electron has one angular momentum, which is this. But remember that when we studied the theory of magnetism, the electron was orbiting around the nucleus, and also the electron was spinning. हाँ. पेयर में उल्टे थे, इसलिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ रहा था. Yes sir. हम शुरू में बोल रहे थे, मैंने कहा बाद में बताऊंगा मैं मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है. तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज गेटिंग कैंसल्ड इन द केस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल डेड होती है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है होता ही नहीं उनके अंदर. तो वो नॉर्थ और साउथ पोल नहीं बना सकते, कुछ नहीं होता उनके अंदर. So the spin, remember this spin. If you are a ball which is revolving like this around a bigger thing, maybe a earth revolving around sun, but you're also orbiting around yourself, which is a spin. So one angular momentum comes to you because you're revolving, but you also have a rotational motion which is because of spinning. So you have a spin angular momentum also, okay? A spin angular momentum also. If you're an electron, you are spinning and you're orbiting. So orbiting वाला तो L हो गया, उसकी वजह से हमने mu निकाल लिया. There is another spin angular momentum, and remember this the spin angular momentum की वजह से जो magnetic movement होता है, जिसकी derivation नहीं है, उसको बोलते हैं हम spin magnetic movement. Represented by mu s and given by the formula mu s is equal to E by m into s. S is the spin angular momentum. So एक इलेक्ट्रॉन के पास दो एंगुलर मोमेंटम हो गए. एक एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ऑफ ऑर्बिटिंग, एक एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ऑफ स्पिनिंग. एक हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ ऑर्बिटिंग, एक हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ स्पिनिंग. And therefore, the total magnetic moment of an electron, which is spinning and orbiting, total is given by mu L plus mu S is equal to minus E by 2me angular momentum plus spin angular momentum. Yes sir. तो कहां से बात शुरू हुई थी? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप. और वो डीप चली जाती है कहां पे? I into A के बाद it goes into electron and then there is no looking back, you can see. Gets into detail and more detail. It goes till Bohr magnetron, doesn't even stop there. It doesn't even stop at the ratio we calculated, E by L. Correct. So Bohr magnetron. Two types of angular momentum. इसकी derivation हमारे कोर्स में नहीं है कि how did we say that a spin angular momentum has a spin magnetic moment associated with it. We have not derived it. हमने किसी को करा नहीं ना म्यू. हमने बस ये बोल दिया कि हाँ जी ये म्यू जो स्पिन है वो ये होता है. Yes sir. जैसे वो गाइनो मैग्नेटिक रेशियो निकाली थी हमने, वहां तो करा था हमने, स्पिन का फॉर्मूला था, डिवाइड हो, या कुछ नहीं करा, सीधा लिख दिया बस. ठीक है. So spin angular momentum थोड़ा सा मतलब वो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिटेल है. Yes sir. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. हाँ. भाई इस लेवल पे जाके ये they have done this study. काफी सारा कवर कर लिया हमने. हाँ, काफी. Substantial theory obviously करी है, but we will have to do a lot of numericals. So we have covered torque, we have covered potential energy of a torque, we have covered stable equilibrium,
unstable equilibrium. We have covered magnetic moment of a current loop. We have covered magnetic moment of an electron called as orbital magnetic moment. दो कवर कर रहे हैं उसके अंदर हमने, एक nth ऑर्बिट का करा है, एक m/l करा है, एक म्यू वाला करा है, और सॉरी म्यू बाय एल, इलेक्ट्रॉन के केस में म्यू ही बोलना है, और एक हमने पढ़ा व्हाट इज अ बोर मैग्नेट्रॉन, एंड देन वी आल्सो टच्ड अपॉन व्हाट इज अ another type of magnetic moment associated with the electron, which is known as a spin orbital magnetic moment. Spins is attached है. Yes, sir. ठीक है. Okay. So whether they give you a current carrying loop or whether they give you a revolving electron, you don't have to really worry. Same ही है. Yes, sir. Makes no difference to you at all. कि ठीक है, हाँ. दे दिया तो दे दिया यार. So I will treat it as only a current carrying loop. ठीक है. I into A की थी ना, I निकाल लिया, एरिया मालूम है जिसमें रोटेट कर आंसर. So remember, just for your knowledge, because there is a orbital magnetic moment available, if you notice hydrogen, it has a magnetic property. हाँ. Hydrogen exhibits magnetic property. It has a orbital magnetic dipole moment inside it. If you calculate, you can calculate mu for a hydrogen, उसका तो n1 ही होता है और तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता. So you can find the mu of a hydrogen electron. So they can ask you, find the orbital dipole magnetic moment of an electron in a hydrogen atom. ठीक है, you know the formula mu E upon 2ml, right? Yes, sir. Just for your knowledge, I don't know if you remember this or not, that the value, okay, let me take you to the next page so that it gets more clear in your head. If you do Bohr's theory, okay, so if you do Bohr's theory, so one you saw is that the angular momentum can be written as n times h upon 2 pi, right? Something like this. Yes, sir. Okay, let me just, yeah. So you have, if you have seen that, I think we did in the previous page, right? Yes. So we did nh upon 2 pi. Okay. So L. And then we have said, okay, E upon, sorry, mu upon L का ratio ले लो और mu को ऐसे लिख लो और फिर बोर मैग्नेट्रॉन H की वैल्यू डाल दो, एक्सेट्रा, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो हमने ठीक है. Now what I'm telling you is slightly different than this. The L in Bohr magnetron, okay, this L, ये जो L है ना, ये वाला, Yes, sir. ये लिखा है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की टर्म्स में. But if you go to Bohr's theory, what will happen is that you can be asked कि please mention this angular momentum in form of azimuthal quantum number, okay, which is L. So you can write it equal to L plus 1 under root in, ऐसे भी लिखते हैं इसको. So angular momentum का एक और फॉर्मूला भी है. तो आपको बोल सकते हैं कि find mu. तो एक फॉर्मूला तो आपको n वाला याद हो गया, और n इज इक्वल टू 1 होता है तो बोर मैग्नेट्रॉन आ गया वो लंबा सा. Yes, sir. कई बार आपको बोलेंगे फाइंड द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन s स्टेट व्हेन इट इज इन s ऑर्बिटल. अच्छा. So they will give you more level of detail than just a principal quantum number. Okay. If they tell you कि s is equal to s ऑर्बिटल में ढूंढो, अब तो आपको तो आदत है प्रिंसिपल क्वांटम यूज करने की, है ना? So what will you do? You will have to write it that the value of in the s orbital will be given by mu, it will be given by under root of L into L plus 1. L is the, L की वैल्यू क्या होती है s के लिए?
zero. जीरो S होगी। orbital. हम्म, So put the value 0 here. ओके। बट वो ऐसे बोलते हैं P में निकालो, अच्छा, तो P में L is equal to 1. 1 होगा। Right? So how do we, जो मैंने mu B लिखा है, if you see that mu B, हम्म, mu B नजर आ रहा है, वो कुछ नहीं यस है. सर। वो basically, it is, if you see the derivation, you will find this mu B is E upon 2m, जो डेरिवेशन हमने करी है, हम्म, मल्टीप्लाई बाय E अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाय H. ये इसको बोलते हैं म्यू बी. लेट मी हम्म, टेक यू टू प्रीवियस पेजेस एंड जस्ट शो यू कि जब हमने बोर मैग्नेट्रॉन निकाला था, लुक एट हाँ, हाउ द बोर मैग्नेट्रॉन हैज बीन डिराइव्ड. सी दिस, हाउ द बोर मैग्नेट्रॉन हैज बीन डिराइव्ड. सो म्यू निकाला, स्पिन हाँ, लिखा, ऊपर है, सॉरी, बोर, ये दिख रहा है आपको, ई एच अपॉन 4 पाई एम। एच अपॉन 4 पाई m e. हम्म, ई है और 2h है, 4 पाई है. लेट मी टेक यू टू दिस प्लेस, बैक टू अवर फॉर्मूला. यस सर। ई है, h है, ई है, 2 है, मास, सॉरी, मास नहीं है हमारे पास. व्हाट वी हैव इज, ओके, वी हैव इक्वेशन, वेट, वी हैव एंगुलर मोमेंटम, ये हमने यूज कर लिया, करंट निकाल लिया, टाइम पीरियड लिख लिया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लिया, म्यू लिख लिया हमने. ओके, एंड सो मैग्नेटिक मोमेंट को हमने लिख लिया E/2me इंटू L एम। अंडर रूट. सो दिस एक्सप्रेशन विच इज, सो दिस इज अ सेपरेट वन, उससे लिंक नहीं है इसका. हम्म, ये वाली जो म्यू बी है, हम्म, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस. तो अगर इफ द क्वेश्चन इज इन nth ऑर्बिट, यूज अवर स्टैंडर्ड जो हमने करा है. बट इफ द क्वेश्चन अच्छा, चेंजेस टू L, माने हम्म, S and P ऑर्बिटल भी पूछने लग गए आपसे, प्लीज डोंट यूज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर्मूला, प्लीज यूज दिस फॉर्मूला. अच्छा, ये अलग फॉर्मूला हो गया. ठीक है। सो दिस इज वैलिड फॉर ऑर्बिटल स्टेट्स. हम्म, इट इज नॉट, इसमें एन नहीं है कहीं पे. यस सर। एन वाला कर लिया हमने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हम्म, बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर NH/2 पाई से कर लिया. वो म्यू आता है एल एन की हेल्प से. ये जो म्यू निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं हम एल, एजीम्यूथल यस सर। क्वांटम नंबर की हेल्प से. हाँ, ठीक है। डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, बट यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, दिस वन. एंड व्हाट इज म्यू बी? दिस ओके सर। 1.67, जो भी है, 1.66 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 to 6.63 इंटू 10⁻⁻34. आई थिंक इसके और उसके बीच में फर्क इतना ही है, इसमें 4, इसमें पाई और 4 नहीं आ रहा, इसमें हम्म, 2 आ रहा, और 2 पाई का फर्क है इन दोनों के बीच में. वो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला इक्वेशन जो है, उसके अंदर यही फर्क है कि उसके अंदर जो वैल्यू होती है, जो लिंक करती है म्यू को और nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, वो फॉर्मूला होता है म्यू इंटू n मल्टीप्लाई बाय EH अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज द ओनली डिफरेंस. इसमें म्यू जो है वो है ये, हाँ, तो फर्क है, मतलब ये L+1 आ रहा है, लेकिन इसमें नीचे म्यू भी जब कैलकुलेट करते हैं तो EH तो दोनों में ही आ रहा है, यस सर। बट डिनोमिनेटर में इफ यू सी द डिफरेंस, ओह हो गया. हम्म, ओके, एनीवे, इफ यू सी द डिफरेंस इन डिनोमिनेटर, इट इज देयर. ठीक है। यू कैन सी दैट द डिफरेंस ऑफ 2 पाई का फर्क है. हम्म, एजीम्यूथल वाले में 2 पाई नीचे नहीं आ रहा, लेकिन एन वाले में, लास्ट फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा नीचे। 2 पाई है EH के नीचे. हम्म, तो अगर बोले S स्टेट में, L स्टेट में, देन प्लीज डोंट यूज N वाला फॉर्मूला, प्लीज यूज द लास्ट फॉर्मूला विच यू हैव लर्नड. अंडरस्टूड। ठीक है, जूम भी हमें कुछ संकेत दे रहा है. हम्म,
आज बम्बार्डमेंट जो है बंद कर दी जाए. Mhm. ठीक है, I think we covered substantial ground now. Yes, sir. What we will do now is continue to practice for 2 classes numericals on this, and then we Okay. will move on to Earth's magnetic field. And once we Okay. do Earth's magnetic field, I think we are done with the chapter. Okay, no, we are not done because we will have to do some parts of properties of the material, which is domain theory हमने पढ़ लिया, but थोड़ा सा हम अब थोड़ा और डिटेल में चले जाएंगे उसके फेरो पैरा, और उसका जो पैरा हमें याद करना है, मेमोराइजेशन पार्ट, मतलब टेबल बना के डिफरेंस याद करते हैं ना. Yes, sir. इसकी वीक और नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी है, इसकी फीबल है, इसकी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एक्स है, जो मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, Magnetic. m by h पढ़ा था हमने फॉर्मूला, राइट. वी विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ द टर्म्स एसोसिएटेड विद द properties of material. So we have to do now numerical practice, which will take us good 2 classes. Then we will have to do Earth's magnetic field, and then we will have to do the. So हमें time लग जाएगा अभी थोड़ा. I think we will be able to close this by Tuesday or Wednesday. उससे पहले हो नहीं पाएगा ये. And maybe slightly one day extra हो सकता है. Let us see. क्योंकि अब numerical part नहीं है कुछ भी. Whatever is going to come is more, except for some questions on Earth's magnetic field, where we have to study Earth's properties of magnetism. Some formulas are there like angle of declination, dip and all that. Compass से related होते हैं. We should be good to go. बाकी theory रह जाएगी properties की, उसको याद कर लेंगे, एक आध formula उसमें भी है. So we should be able to finish this, I think, by Wednesday. जल्दी में अभी करने का, we don't need to rush through it. Let's complete line by line. ठीक है जी, let's meet tomorrow then. Yes, sir. And continue our discussion on this chapter. We will do numericals only tomorrow, and revise all the formulas and do दो numerical कर लेंगे, solved unsolved. ठीक है. Okay, ठीक है जी, all right.